Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 2 of class 3. The chapter name is addition of two digit numbers. Dear student, we already completed our 8 parts where we learn about the chapter कि हमें एडिशन करने कैसे हैं. एडिशन का पूरा प्रोसीजर हमने समझा, कई सारे मेथड्स को हमने वॉच आउट किया, कई सारे मेथड्स की एक्सरसाइज हमने की. आज का जो हमारा पार्ट है, इट मीन्स वी स्टार्ट आवर पार्ट नंबर 9 एंड हेयर वी विल डू आवर miscellaneous exercise 2. It means it is an exercise depending the whole chapter. In short we can say it is our worksheet. ओके इस वर्कशीट में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो पूरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर है, जितने पार्ट्स को हमने अब तक रीड आउट किया उसके जो क्वेश्चंस है वो रैंडमली हमें यहाँ शो ऑफ होंगे, उन्हें हमें सॉल्व करना है एंड जो हमारा नॉलेज है उसको चेकआउट करेंगे क्या हम वास्तविक रूप से यानी हम रियली में उसको लर्न कर पाए या फिर नहीं लर्न कर पाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 and we will show here question number 1. And what is the question? The question says write the unit 10 and 100 place value in the following numbers. You can check here a table. Okay, and what is the table? Describe करते हैं. You can see here numbers. Okay, here hundreds column, here you can see tens column, and here we can check units column. So what you understand, हमें करना क्या है? Dear students, we learn about place value system and face value system. In this part of the question we will do about the face value. It means हमें ये बताना होगा 100 places पे कौन सा नंबर है, 10 places पे कौन सा फेस दिख रहा है हमें, यूनिट प्लेसेस पे हमें कौन सा फेस दिख रहा है. एंड व्हाट इज द यूनिट प्लेसेस? यूनिट इज ए सिंगल और लूज प्लेसेस, वी कॉल दैट ए वंस प्लेसेस आल्सो. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. यू कैन चेक एग्जाम्पल. Number is ones, tens, 100, 3 digit number. So how many 100 there are? You can check. 100 places value is as 3, so we write here 3. The tens places value is as 5, so we write here 5. And at last single unit is a 7, so we write there 7. So finally we have 300, 5 tens and 7 units. Now move the next number. You can check ones, tens, 100. How many 100 there are? There are the value of 100 is as 8, so we write 8. How many tens are there? Nothing, so we write 0. How many units are there? 2, so we write 2. So finally we have 800, 0 tens and 2 units. Next को check करिए. How many 100 there are? 7. How many tens? 0. And how many units? 0. So finally we can say we have 700, 0 tens, 0 units. The final number is 700. Okay, चलिए नेक्स्ट को चेक कीजिए. ones, tens, 100. How many 100 there are? 3. How many tens you can see there? 8. And how many unit you can see there? 0. So we can write there 0. So finally we can say we have 300, 8 tens and 0 units. At last you can check here, it is 2 digit number, so easily we can say we have nothing on the places of 100, so we can write here 0. Okay, how many tens we have? 2. How many ones, your single unit you can see there? 4. So finally we have 0, 100, 2 tens and 4 single unit. Our number is 24. It is our first question. We solved it very easily because we learn about that on our chapter. चलिए start करते हैं. Next को you can see there question number 2. Write in the form of unit 10 and 100 place. So easily we can say कि हमें यहाँ पे number name write करना है. So सबसे पहले हम expand form write करेंगे, then we easily write the number name. चलिए start करते हैं. You can check ones, tens, 100. How many 100? 4. So we can write 400. Add by how many tens? 4 tens. So 4 tens means 40. And how many ones or single unit you can see there? There are the 8. So we can easily write the 8. Because we know unit places एक ऐसा places होता है जिसकी face value and place value दोनों same होती है, हम भी know. तो what is the number finally? 448. We can write here 448. फाइनल. ओके, नेक्स्ट की ओर मूव करिए. ones, tens, 100. हाउ मेनी 100? 8. सो वी राइट 800. एड बाय 0 tens, add by 2 units. It means our number is
800 and 2. ओके गेट इट. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. यू कैन चेक हियर ones, tens, 100. हाउ मेनी 100? 600. हाउ मेनी tens you can see? They are nothing. And how many ones or single unit? 0. So finally our number is 600. Okay, because we don't have any tens place value and any ones place value in this number. And check the last number, ones, tens, 100. How many 100 you can see there? 200. Add by 6 tens, it means 60. Add by 0 unit, it means 0. So finally our number is 260 final. खत्म. ओके फिनिश अप. हमने फाइंड कर लिया 260 इज आवर नंबर. सो इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 वेयर वी फाइंड द नंबर नेम और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन number. Now we move our next question that you can check here. The question is says solve it. How can we solve the numbers? Because we know about the columnar form, in easy way we can say हमें unit places में unit places को ऐड करना है and tens places में tens places value को ऐड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. You can check here unit places, tens places. 4 after 3 more. 4 के after 3 5 6 7. So okay, we can easily write here 7. Okay, now time to count the tens places. 2 and 3 कितना हुआ? 2 finger. Then 1 2 3 more finger. How many finger there are? The open finger value is as 5. So we can easily say 3 add by 2. Answer is 5. Solid. Okay, चलिए next की ओर move करते हैं. You can check here another question. Ones places value 4 and 8 you can see there. So we can draw 1 2 3 4 5 6 7 8 lines, then 4 more lines 1 2 3 4. Final lines कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 is 2 digit number, so we can't write on the place value of the ones place. So easily we find the ones place value, that is 2. So we can write here 2. 1 is as a tens places, so we call it as a carryover. Okay, so now time to count the tens places. 6 after 3 more. 6 after 3 count कीजिए. 7 8 9. 9 after 1 more, so total amount 10. We can write here 10. So final number is 102. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. You can check here 6 after 2 more. 6 and 2 कितना हुआ? 7 8. So we can easily write here 8. Good. And 7 and 2 कितना होगा tens places पे? 7 after 2 more 8 9. So we can easily here 9. So final answer is 98. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. You can check here our next question. Okay. So unit places है 2 and 9. 9 after 2 more. Here is our 9. 1 step, 2 step. 10 11. Final number is 11. 11 is a 2 digit number, so we can't all number right there. So we find the ones places value, that is 1. So we write here 1. 1 is as carryover, so we write here 1. Okay. 8 and 3 कितना हुआ? 8 after 3 more 9 10 11. 11 after 1 more, that is 12. So we write here 12. Is our final answer is 121. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर. You can check here our last question of the part, that is question number 4, and it is commanded us to solve it. क्या सॉल्व करना है? चलिए चेक करते हैं. You can check here 15 add by 25, so we write the number as columnar form. Okay, so 5 and 5 कितना हुआ? भाई ये तो सबसे इजी होता है. 5 finger and 5 finger. How many total fingers? 10 fingers. So 10 is a 2 digit number, so find the ones places, that is 0, and find the tens places, that is 1. So we put 0 here and 1 is as a carryover. Now 2 and 1 कितना हुआ? 3. 3 after 1 more 4. So total amount कितना होता है? 15 and 25 को ऐड करने के बाद में 40. So we write there 40 as answer. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. You can check here ones, tens, 100. It is a number of 3 digit. So सबसे पहले हम यूनिट प्लेसेस को सॉल्व करेंगे. 7 and 0 कितना हुआ? 7 after 0 more. So number is not changeable because we know if we add 1 in a number, then we find the next number.
If we subtract 1 in a number, then we find the previous number. But if we add or subtract 0 in any number, then the number is itself. It means number कभी change नहीं होगा, कोई वैल्यू पे फर्क नहीं होता उस पर. 7 and 0 टोटल अमाउंट 7. 2 and 2 कितना हुआ 4. वेरी गुड. 7 आफ्टर 6 मोर. 7 से 6 काउंट कर लीजिए. ये 7 1 2 3 4 5 6. So 7 after 8 9 10 11 12 13. So we can write all number here 13. So final answer is 1347, 4 digit number. And what is the smallest number of 4 digit? 1000. और बिगर नंबर की बात हम हमारी क्लास 4 में करेंगे. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. यू कैन चेक हियर 7 add by 7. 7 and 7 कितना होगा 7 after 7 more. So here is 7 1 2 3 4 5 6 7. 7 आफ्टर काउंट कीजिए 8 9 10 11 12 13 14. So final number 14. 14 is a 2 digit number. So we find the ones place value, that is 4. So we write here 4. How many tens we have? 1 10. So put in the tens places houses, that we write here as carry over. 7 after 2 more 8 9 and 1 more 10. So we can write here 10. The final answer is 104. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर. यू कैन चेक हेयर वी विल ऐड 2 डिजिट नंबर इन 1 डिजिट नंबर. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें रिमाइंड रखना है द रूल ऑफ एडिशन. क्या रूल है कि हमें जो वंस प्लेसेस है उसमें वंस प्लेसेस को ऐड करना है, टेंस प्लेसेस में टेंस प्लेसेस को ऐड करना रहता है. सो यहाँ पे देखिए वंस प्लेसेस और टेंस प्लेसेस दोनों है ना. यहाँ ये हमारा वंस प्लेसेस, ये हमारा टेंस प्लेसेस. सो यहाँ हमने क्या किया 0 and 5 को ऐड किया. कितना आया 5. वी हैव ओनली 1 नंबर में ही हमारे पास में टेंस प्लेसेस है. सो वी कैन राइट हियर 0 ऑल्सो. ओके, नो इशू. सो 5 and 0 कितना हुआ 5. सो फाइनल आंसर इज आवर 55. Now time to move on next question. You can check here 25 add by 7. So 5 में 7 ऐड कीजिए. 7 after 5 more 8 9 10 11 12. 12 is a 2 digit number. So we can write only ones places here and 1 is as carry over. You can write there. 2 and 1 कितना हुआ 3. So final answer is 32. तो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने, हमने मिससेलेनियस जो हमारी एक्सरसाइज थी, इट मीन्स जो रैंडमली एक्सरसाइज थी, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस को देखा, जहां हमने नंबर फॉर्म को भी देखा, फाइंड द मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म भी फाइंड की, हमने नंबर नेम भी फाइंड किया, और कॉर्नर फॉर्म में हमने एडिशन भी किए 2 डिजिट 3 डिजिट या 2 डिजिट में 1 डिजिट के भी किए. इतने सारे क्वेश्चंस को हमने रैंडमली सॉल्व किया. एंड यू फील हम इन सबको बड़े इजीली कर पा रहे हैं. क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज जब हमने चैप्टर को रीड आउट किया था तो हमने अच्छे से फोकस किया था अपनी स्टडी पे, तभी तो हम कर पा रहे हैं ना. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉइंग द क्लास एंड सी यू सून इन आवर लास्ट एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 2. सो टेक केयर एंड रीड आउट. थैंक यू.